Manohar, fast-paced developments happening at Arvind Kejriwal's residence. What really is transpiring there? I think we've lost Manohar's connection there, it seems. But let me bring in Vineet Goenka, political analyst, for his first response. Vineet, Saurabh Bhardwaj there of the Aam Aadmi Party, of course, hitting out at the government once again, saying it seems that there are efforts being made to arrest Arvind Kejriwal. That's what the AAP has been saying all along. In fact, they tried to, challenge the ED summons in court as well. See, it's a clear open and shut case where we all know that money has changed hands, and Arvind Kejriwal knew this in the case of Liquorgate. Else, why Supreme Court and other courts would have denied bail to Mr. Sisodiya or Satyendra Jain or Sanjay Singh? Those were elected representatives, in fact. So, this is an open and shut case. A. B. It is a habit of Aam Aadmi Party to say that arrest ho jayega, when they know that the culprit is within their house and they will be arrested for their crimes and their receipts. So, till this day, Arvind Kejriwal was challenging the agencies, himmat ho to arrest kar lo. But it is preemptive to right now to say whether it is an arrest, whether it is a raid, whether it is a questioning. See, he has chosen not to go to ED office even after 8-9 summons. He is deliberately instigating the agencies, he is deliberately insulting the institutes of this country. A criminal with a record where he has received money, where his accomplices have received money, decides to insult the system, should not be tolerated by the voters of the country, and especially of Delhi. So today, Arvind Kejriwal and his gang has to answer, why did they open multiple shops of liquor? Why did they have this cartel coming? Why did they increase the commission from 2% to 12%? Why did they increase the number of sale of the liquor by reducing the number of dry days? Why did they increase the number of hours of sale? Why did they decrease the age limit? Today, if you go to Kondli, Silampur, Bhavana, you will find young boys drinking openly. If you go and ask any mother, she's worried that his kids can get into a habit of drinking. Now, for few rupees, if you force your citizens, your voters, to get into a habit, addiction of drinking, I think it is unfair and also evil. So he's paying the price of the known evil which he did. And I wish, I'm using this word, I wish ED arrest him and then the courts give him justice. Okay. Gyanendra Mishra, Vineet Goenka saying that he believes Arvind Kejriwal is guilty. He believes that an arrest should be made as soon as possible. Your response, Gyanendra Mishra, and also what you make of these developments, that are taking place at Arvind Kejriwal's residence, and the charge, of course, also being levelled by the Aam Aadmi Party's Saurabh Bhardwaj. To our knowledge, the ED has not been able to establish any credible money trail, and this against any of the accused. And this is what the High Court, from the trial court up to the Supreme Court, the honorable judges have made the observation that though you have arrested many of its leaders and they are almost languishing in jail for quite some time now, the essence of a money laundering PMLA case is to establish the money trail. And that money trail has yet not been established by ED before any court of law. The second point is that, it was the observation of the Honorable Supreme Court that if you were telling that the fund has gone to the party, why you have not made the party an accused? And it has happened down almost 1.5 years when the ED was investigating it. And after the Supreme Court's observation and the statement made in the Supreme Court that we will consider making Aam Aadmi Party an accused as well, the ED later on made Aam Aadmi Party as an accused, and the Arvind Kejriwal, being the chief of the Aam Aadmi Party, obviously and coordinate accused in the matter. And so therefore, if there was something which clearly involved Arvind Kejriwal in terms of receiving the kickback, why ED for almost 2 years made no attempt to make him an accused, and
only after when Supreme Court questioned the intent and motive of ED by saying that at the one hand you say that the money में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर जा रही हैं? हो रहा है? अभी तो देखिए अंदर जाने का सवाल नहीं है, अभी तो पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे इंतजार करेंगे। अभी आएंगे क्या? और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। जो नेक्स्ट इसमें आपका स्टेप होगा मैम, वो एक बार बता दीजिए मैम। Fact is also with us now on the broadcast. Manor, if you're able to hear me, Atishi now also attacking the government after Saurabh Bhardwaj. Obviously, the Aam Aadmi Party believes that there are efforts being made to arrest Arvind Kejriwal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। ईडी कह रही है कि फिलहाल ये भी सर्च ऑपरेशन है और पूछताछ की जा रही है। तो सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें 4-4 बसों में पुलिस भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें 2-2 वैन रैपिड एक्शन फोर्स भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? तो ये बिल्कुल साफ है। देखिए, ये कोई पहला सर्च ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है। सैकड़ों जगह रेड मार चुके हैं, 1 रुपया नहीं मिला है ईडी को 2 साल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो सैकड़ों अरविंद केजरीवाल इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। हो पा रहा है अरविंद जी से बात में कुछ बात हो अभी कोई संपर्क नहीं है। गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या आप लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो देखते हैं क्या होता है। अभी पुलिस आपको जाने दे रही है या नहीं? आप नहीं, हम तो अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं। मैम कोर्ट में क्योंकि मामला मैम कोर्ट में क्योंकि पूरा मामला है, तो एक रिएक्शन इस पर जरूर आप दे दीजिए कि इसमें नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, क्योंकि आज ही जैसे कि कोर्ट में भी क्या था मामला और चीजें हुई थी आज भी। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी जो उनके मालिक हैं, कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो कोर्ट का सम्मान करते तो आज ही धमक बढ़ने की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने नोटिस दे दिया तो वो क्यों इस फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक साजिश है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अभी क्या संपर्क हुआ है ये और बता दीजिए। नहीं। Manjinder Singh Sirsa of the BJP joins us now on the broadcast. Manjinder Sirsa, Aam Aadmi Party ministers Saurabh Bhardwaj, Atishi hitting out at your party, hitting out at the centre, saying this is being politically motivated. एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 100 केजरीवाल बाहर आएंगे और 100 केजरीवाल लड़ेंगे। आतिशी का ऐसा कहना है। What do you make of these charges being leveled on your party by the AAP, and also what is happening at ED? What do you make? What is happening at, beg your pardon, Arvind Kejriwal's residence this evening? What do you make of that? जी, पहली बात जो आपने अभी कहा, एक अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करोगे 100 आएंगे। ये आतिशी ने कहा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आतिशी जी की ये सोच है कि इतने करप्ट लोग पैदा करने हैं, करप्शन से ही उन्होंने, करप्शन तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लोग कभी इनको दोबारा इनकी शक्ल भी देखेंगे। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा,
ईडी वहां पे क्या करे? देखिए, इसका हम तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो आप और हम देख रहे हैं, आपने भी देखा आज कोर्ट में जो हुआ, मैंने वो सारी प्रोसीडिंग्स देखी। मैंने ये मानता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी खुद जब हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा ये फर्जी सम्मन है, एक, दूसरा कहा इलीगल है, दो, और तीसरा कहा कि मेरी अरेस्ट को स्टे किया जाए। जब ये कोर्ट में आया तो कोर्ट ने उनसे पूछा आप क्यों नहीं जा रहे ईडी के दफ्तर? जब आपको ईडी ने बार बार बुलाया तो पेश क्यों नहीं होते? तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे अरेस्ट करेंगे। जब ईडी के वकील से पूछा गया, मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देख रहा हूं, उसको आपको लाइव बता रहा हूं, तो जब पूछा गया तो ईडी ने कोई कहा बिल्कुल हम अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये जब तय हो गया कि अरेस्ट कर सकते हैं, तो मानयोग हाईकोर्ट ने कहा हम एविडेंस देखना चाहते हैं, आज ही दिखाइए, अभी दिखाइए। तो ईडी ने जब एविडेंस प्रोड्यूस किया जज साहब के सामने, तो जज साहब ने अरविंद केजरीवाल जी को स्टे देने से इनकार कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जब अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में ये कहने पर भी कि ईडी इनको अरेस्ट करेगी, कोर्ट उनको स्टे करने से इनकार कर दे, तो ईडी के पास क्या विकल्प बचता है? बताइए, आप खुद बताइए। अब उसको कहें जी बीजेपी करा रही है, फलाना करा रही है, हम 100 लोग पैदा होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई इनका स्टैंड है क्या? ये कहते थे मनीष सिसोदिया निकले, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरे भाई बताइए कौन से ताले टूटे? कहते थे इसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो करप्ट है, वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह डरते नहीं है, जेल में जाएंगे। तो अभी आप क्यों डर रहे हो फिर? बताइए, मतलब कोई स्टैंड है क्या इन लोगों का? किस बात को मानेंगे आप? बताइए, अतीशी जी की कौन सी बात को आप मानना चाहते हैं? मैं आपको उसका जवाब देता हूं, आप अतीशी से पूछिए कौन सा स्टैंड है जिसपे आप आज तक कायम रहे हो। आप तो अरविंद केजरीवाल कहते थे पकड़ो ना मेरे को, पकड़ो ना। अरे भाई क्यों नहीं पकड़ते मेरे को, पकड़ो ना। अब पकड़ने आ गए तो कह रहे पकड़ क्यों रहे हो भाई? बताइए, मतलब किस बात का जवाब दें हम? बताइए आप जी। क्या आपको लगता है कि ये केस में काफी दम है? ये जो केस है जो बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, करते नहीं? आपका हाईकोर्ट पे विश्वास नहीं है आपके टीवी चैनल का? क्षमा चाहता हूं, मेरे को ऐसा पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपने मेरे से पूछा इसलिए कह रहा हूं, क्या आपको हाईकोर्ट के विश्वास नहीं है हाईकोर्ट के ऊपर? जी। तो आपको लगता है जो आज कार्रवाई हुई है उससे साबित हो जाता है कि काफी दम है, काफी मजबूत है ये केस? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने भी सबने देखा। देखिए, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट से इन्होंने बेल ना मांगी होती, और मैं और आप फिर भी एक बात मान सकते थे कि भाई हाई कोर्ट क्या पता था इसको अरेस्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, वो कह रहे हैं कि ये समन जो है, ये पूछताछ जो है, ये गिरफ्तारी की कोशिश जो है, ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों? व्हाई जस्ट बिफोर द इलेक्शंस मिस्टर सिरसा? क्योंकि 9 समनों पे नहीं गए, 10वें पे उन्होंने बेल मांगी, बेल नहीं मिली। जब बेल नहीं मिली तो उनको अरेस्ट करना पड़ा। बताइए, बड़ा आसान सवाल है। आप फिर से सवाल दोहराइए, मैं जवाब दोहरा देता हूं। 9 समनों पे नहीं गए, 2023 जनवरी में, फरवरी में पहला सम्मन दिया था, पिछले 12-11 महीनों से वो नहीं गए। जब 1 साल से नहीं गए, हाई कोर्ट में बेल लेने गए, आज हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, ईडी अरेस्ट कर लिया, या करेगी या करने पहुंचगी, जो भी। तो बताइए इसमें क्या, इसमें कौन सी बात है जो नहीं समझ में आ रही किसी को? जी। मनजिंदर सिरसा साहब की 2 केस हैं। एक केस है दिल्ली जल बोर्ड स्कैम का, दूसरा केस है लिकर पॉलिसी स्कैम का। इन 2 केसों पे आपकी टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है कि लेन देन हुआ है, क्विड प्रो को है, आरोप जो हैं वो क्या मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं, या फिर उनके भीतर ये सब हो रहा था? क्योंकि दूसरे जो नेता हैं वो उन पे तो और सवाल हैं, उन पे तो और गंभीर आरोप है, मगर क्या मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के पास कोई दायित्व नहीं है, कोई पोर्टफोलियो है नहीं। जी, तो मैं आपके ध्यान में ला दूं, पहले ये कंप्लेंट मेरी थी, आपकी जानकारी में होना चाहिए, मेरी ही कंप्लेंट है जिसपे कार्रवाई हुई। ये वो कंप्लेंट थी जिसमें मैंने एक तत्व को साफ जाहिर किया था। तो आपके टीवी चैनल के सुनने देखने वालों के लिए मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट बैठक करके ये पॉलिसी को अमेंड करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया, उनको अधिकार दिए, और बाद में ये भी अधिकार दे दिए कि इनको पॉलिसी कुछ भी बदलनी हो तो मनीष सिसोदिया जी को कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। अपनी मर्जी से बदलने के बाद के कविता जो कि उनके सहयोगी भी हैं, और आपने देखा होगा पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी के लिए केसीआर राव किस तरह से पंजाब में जाके उद्घाटन कर रहे थे, दिल्ली में उनके घर पे आके बैठ के कर रहे थे। तो के कविता जी के पास ये पॉलिसी दी गई, वो साउथ से लोगों को लेके आए, और बकायदा उस एवज में
उन्होंने इंडो स्पिरिट कंपनी जो थी उसके 2/3 शेयर अपने नाम करवाए। इसको ध्यान से नोट कर लेना। इंडो स्पिरिट कंपनी जो कि पिछले 15 साल से दिल्ली में शराब का काम कर रही थी, इस पॉलिसी बनने के बाद उसके 2/3 शेयर जो थे कविता जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम चले जाते हैं। और ये सारी पॉलिसी के एवज में जो कविता जी साउथ से लोगों को लेके आए थे, उनके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों ने पैसे लिए। तो अब अरविंद केजरीवाल जी अगर साइन नहीं करेंगे तो ये तो बड़ा स्पष्ट है ना, ये कुछ पाना चाहते हैं। ये तो उससे भी बड़ा ऑफेंस है। ऐसा लगता है कुछ और अधिकारी इस वक्त पहुंच रहे हैं। लेट्स गो नैट अप टू अरविंद केजरीवाल। जज मनजिंदर सिरसा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस विद योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस स्टोरी। लेट्स ट्राई एंड रेज द नेट ओवर देयर। लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। A lot of action happening there at Arvind Kejriwal's residence. We will just try and get our reporter from Kejriwal's residence in a second. But as you can see, it seems reinforcements are being called in. Obviously, a lot of security there already on ground. Brian Anthony Thomas is joining us for more details on this story. Brian, what is transpiring there at Arvind Kejriwal's residence? A thick security presence on ground? Well, there are 10 to 12 officials now from the very probe agency who are currently present at Kejriwal's residence, and heavy police deployment also there has been made, as even sources are also saying that the agency team has come with the very search warrant, and even Kejriwal has, earlier skipped 9 summons calling them illegal, and even, the Aam Aadmi Party stance was also from before that it is illegal, it is absurd, and they are, and even there was another separate, case by the Delhi Jal Board also where he was summoned, but he did not. He said that it is clearly illegal and he will not be recording his very statement. And now also following the very High Court's refusal to grant any protection to the Delhi Chief Minister Kejriwal, now the probe agency, the team of ED has arrived his official residence, and the development, if we show you after the very court's decision, is significantly showing the turn of events in the ongoing, investigation. The officials initiated searches at his very residence under the provision of the Prevention of Money Laundering Act, and this move also underscores the intensifying scrutiny surrounding his very involvement in the Delhi excise policy, which has been, marred by allegations of corruption and money laundering. And even Delhi High Court's ruling also earlier in the day, Uday has dealt a setback to Kejriwal as it declined to grant him interim protection from the potential arrest over the summons issued by the ED in connection with this, excise policy. And also there is, and now if you show you, if you see the visuals also, you can actually understand that there are, heavy security deployment outside his very residence. There are 10 to 12 officials of probe agency who are present at the Manohar Kesri is also with us live. Manohar, can this be called a raid, is that not quite clear yet? Because obviously if they have arrived there with papers to search the residence, it can be perhaps called a raid. There are ED officials inside right now, a lot of security outside. Manohar, what's happening there? देखिए, बिल्कुल करीब 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और ईडी ऑफिसर्स अरविंद केजरीवाल के घर पे हैं, उनसे पूछताछ कर रही है और सबूत को खंगाल रही है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज ने भी बोला कि अरविंद केजरीवाल से उनकी बात नहीं हो पा रही है, उनके सचिव से बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि उनके फोन को कब्जे में लेकर के वो अंदर पूछताछ कर रही हो। और अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास जो 6 फ्लैग स्टॉप रोड है सिविल लाइन में, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट है, जिसका नतीजा है कि सड़कों पर भी जाम लगा है। हम अभी उसी और मूव कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे जाम है, धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ रही है। तो सबसे बड़ी खबर अब तक की है कि अरविंद केजरीवाल, हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि सिर्फ सम्मान देने आए हैं, मगर मुझे लगता है कि ये बात झूठ है। सम्मान देने का सिर्फ एक बहाना है। अंदर सर्च चल रही है। मुख्यमंत्री जी के और उनके ऑफिस के लोगों के पास फोन का एक्सेस नहीं है, बिना फोन के हैं, और अंदर सर्च ऑपरेशन जो है ईडी का चल रहा है। अब वो सही है गलत है, मगर अरेस्ट करने की तैयारी अब पूरी तरीके से देखी जा सकती है। जितना डर अरविंद केजरीवाल को आज भारत की सत्ता को से लग रहा है, भारत की सत्ता को लग रहा है, अरविंद जी से लग रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक अत्याचार है। ये एक छोटी सी पार्टी जो अभी आई, उसको कुचलने की, उसको ख़त्म करने की
पूरी केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत से उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर ये कहूँगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आप कर लोगे, मगर उनकी सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। जितना अत्याचार करोगे, उनकी सोच उतनी ज़्यादा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैलेगी। थैंक यू सर। चलो बाद आप सुन रहे थे और मृदुल Okay, let me also quickly bring back in Manohar Kesri onto the broadcast. Manohar, I presume you are on your way to Arvind Kejriwal's residence or on your way to the ED office. What are ED sources telling you? Have they officially confirmed whether they are there to serve summons, as Saurabh Bhardwaj was saying, it was said earlier, or whether they are there to, to raid Arvind Kejriwal's residence or make an attempt to arrest him? देखिए, अभी जो सोर्सेज दिखला रहे हैं कि वो समन देने के लिए गए हुए हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके यहाँ रेड पड़ा है, छापेमारी हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। उनका ये कहना है कि अभी तक जब उनसे संपर्क साधा गया तो संपर्क नहीं हो पा रहा, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात हो या उनका, उन दोनों से फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा। हो सकता है उनके फोन को साइड रख दिया गया हो, चल रहा है, क्योंकि 10 से 12 ईडी के ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार शुरुआती जो खबर आई उसके बाद वो लोग अंदर गए और अंदर जो है तो पूछताछ और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो कि जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका क्या है। ईडी की ओर से कोई औपचारिक बात नहीं कही गई है, लेकिन सोर्सेज की खबर आ रही है कि ईडी की टीम जो है मौजूद है। ये नोवा था और वही अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है कि केस फाइल कर दी गई है अपनी इस मामले को लेकर के, क्योंकि हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई थी और 22 अप्रैल का वक्त दिया गया था। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें मनोहर, तो ये इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्योंकि चुनाव जो हैं, चुनावों का बिगुल ब्लो चुका है, चुनावों का बिजल बज चुका है, चुनावों की तारीख आ गई है सामने। चुनाव से ठीक पहले ये जो प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिक मायने क्या है इसके? बिल्कुल साफ है। देखेंगे पहले फेज का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और मिशन का दौर भी शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह से पॉलिटिसाइज कर रही हैं और कह रही कि अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं। जितना भी अरविंद केजरीवाल को कैद करेंगे उनकी सोच इतनी मजबूत होगी और इस पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बीजेपी तो उनका ये कहना है कि उनसे अपनी ओर से काम कर रही है, लगातार उन्हें जब विधान और उनका ये ऑलरेडी समन है और उतना कहने के बाद वो ठीक कहते लगा 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 9 समन भेजे गए। आज वो हाई कोर्ट का भी रुख किया था और अब उन्होंने अपनी जमानत के लिए और इस समन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं। जी बिल्कुल। और मनोहर, अब बात करें तो ये जो कोर्ट में आज कार्रवाई हुई, उससे क्या काफी जो है सेटबैक हुआ है अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि राहत नहीं मिली, बेल नहीं मिला, अंतरिम जमानत भी नहीं मिली। शायद कार्रवाई जो है वो कल तक टल गई है। क्या ये सही है? क्या प्रयास किया जा रहा है उच्च न्यायालय भी जाने का मनोहर? देखिए बिल्कुल, आज तो हाई कोर्ट से उन्हें झटका जरूर लगा, क्योंकि उन्होंने जो इस याचिका को लेकर के गए थे उनको खारिज कर दिया गया है। आपको लग रहा है गिरफ्तार किया जाएगा उनको? कर सकते हैं, जितनी बड़ी फोर्स से आए हैं, जितनी बड़ी फोर्स लेकर के आए हैं, शुरू हो चुके हैं। और इससे क्या अंदाजा लगा है? ईडी को पूछताछ करनी होती, 2-4 आदमी आते बात करते हैं उनसे। जानकारी मिली है कि किस विषय में यहाँ पर ईडी पहुंची है? ये सर अरविंद केजरीवाल को देखिए, ये सर्वविदित है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला। 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों? डर ये है, इलेक्शन आ गए हैं,
इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना है। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। रामनिवास गोयल स्पीकर है दिल्ली असेंबली के, आप ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान आ रहा था। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। दैट वाज रामनिवास गोयल, स्पीकर ऑफ द दिल्ली असेंबली, स्पीकिंग देयर on the broadcast. Brian Thomas also continues to be with us. Brian, political reactions also pouring in thick and fast. Aam Aadmi Party ministers reacting. Ramniwas Goel, the speaker, also now reaching Kejriwal's residence. The Aam Aadmi Party obviously is saying that this is being done to crack down on him ahead of the elections. Well, definitely, Uday, from earlier only, the Aam Aadmi Party stance was very clear to the fact that they have always denied this very claims by the ED. There have been 9 summons. There have been a separate summons from Delhi Jail Board as well. And from early onwards, the Aam Aadmi Party was consistently denying the fact that they were saying that it is absurd, it is illegal, and it is baseless, and it is a cover-up by the BJP to get the chief minister arrested. And even, Atishi, Saurabh Bhardwaj, all of them are also, even Raghav Chadha also tweeted now saying that, the people are with Kejriwal, and also to the fact that he is being targeted by the Bharatiya Janata Party. And even Atishi is also slamming the BJP, saying that it is a move by the Prime Minister to get the Chief Minister behind the bars. And the entire Aam Aadmi Party, rather, Uday, is saying the same thing, is singing the same tune of the fact that it is illegal, it is baseless, and it is an attempt by the Bharatiya Janata Party, by the Prime Minister, to get Arvind Kejriwal behind the bar. Yes, Uday. More reactions coming in. अभी जानकारी तो टीवी के माध्यम से ही मिल रही है और हम अंदर हमारी बात किसी से हो नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सबके फ़ोन को रख लिया गया है। लेकिन जिस तरह से ईडी आज आनन फानन में आकर आज रेड कर रही है, आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरिम रिलीफ पर 22 अप्रैल को सुनेंगे हम। आप 22 अप्रैल तक इंतजार कर लेते आप, तो ऐसी कौन सी आफत है? 2 साल से आप जांच कर रहे हैं ना। 2 साल से आप हमारे एक मंत्री को आप सालों से जेल में बंद कर रखे हुए हैं, हमारे एक सांसद को बंद करके रखे हुए हैं। आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री कुछ नहीं मिल रहा है आपको। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लग चुकी है कि ट्रायल शुरू करो, ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हैं आप। आज कल भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय संजीव खन्ना जी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट में ईडी गुंडागर्दी कर रही है। सालों आप जेल में बंद रख रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सालों बंद रख रहे हो। तो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो तब अरेस्ट करो, कल ही कहा, आज क्या आफत आ गई? तो इसका मतलब है ईडी को अपने मन से जांच करने नहीं आ रही है। ईडी को नरेंद्र मोदी का प्रेशर है, भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में ईडी आज एक एजेंट की तरह सभी कानून को, सभी फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक सेटअप को तार करके आज ये साजिशें कर रही है। देश जवाब देगी इसका। सर, अगला स्टेप क्या होगा आम आदमी पार्टी का, वो क्लियर एक बार कर दीजिए। और आपने कहा कि अंदर बात नहीं हो पा रही, तो देखिए हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अगला स्टेप भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या होगा, आज ईडी क्या कर रही है। देखिए, दिल्ली की जनता ने यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की भलाई के काम कर रहे हैं और करते रहें, वो करते रहेंगे। तुम जेल भेजना, तुम जेल भेजो, जेल सरकार चलेगी। गिरफ्तारी होती है तो क्या आगे जेल से सरकार चलेगी। हमने पहले भी कहा, या हम विधायक होने के नाते कह रहे हैं, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है, तो अरविंद केजरीवाल का मैंडेट है अगर, तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल भी जाएंगे तो सरकार जेल से चलेगी। संजीव जी, क्या आपको लग रहा है कि गिरफ्तार किया जा सकता है? Aam Aadmi Party MLAs there also reaching Arvind Kejriwal's residence. Akshit Gupta also is with us live. Akshit, reportedly security has also been upped there. Rapid action force, police, that has all been increased outside his residence. High security zone it's become. Well, yes, correct. Today, the security has been beefed up outside the Chief Minister's residence. And as we know, many political reactions are also pouring in, where, of course, Aam Aadmi Party leaders are saying that it is an effort, it is an attempt to arrest the Chief Minister, because a 12-member team of the ED has reached the Delhi Chief Minister's residence with a search warrant in the excise policy case. Well, the ED actions, very importantly, comes hours after the Delhi High Court, refused to grant protection
protection from arrest to Kejriwal in the liquor policy case, because as we know, he approached the Delhi High Court, and of course, he has also challenged the ED summons to him for questioning over alleged money trail. And as you said, a heavy police deployment can be seen outside Kejriwal's house, as a probe agency has already started questioning him. And of course, he has already escaped the 9 summons. And the ED is, of course, questioning Arvind Kejriwal under Section 50 of the Prevention of Money Laundering Act. So, of course, the security has been beefed up. Aam Aadmi Party leader Saurabh Bhardwaj has also said that it is an attempt to basically raid. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास के अंदर हैं और सर्च जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाहर पूरी पैरामेडिक फोर्स लगा दी गई है, इतनी पुलिस लगा दी गई है और पुलिस आने से रोक रही है। मुझे लगता है एक दिल्ली, राजधानी दिल्ली के सीएम के निवास के बाहर ये सब चीज़ हो रही है, पुलिस लगाना, कोई ऐसी चीज़ या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है, उनको नहीं रोका जा सकता। But ma'am, 9 summons skipped very clear and categorically. High Court also went on to say that no coercive action would be, not granted to Mr. Arvind Kejriwal. Is it not flouting of the law? See, this entire matter is going on into the court, and still today the court, the court has given the notice to the ED, and ED is supposed to answer on 22nd of April. So why there is so hurry? Why there is so hurry, and why such kind of raids in the capital city of Delhi with the CM is happening? And see how much of the police has been deployed. But ma'am, if we see the trajectory of events, there were 9 summons. देखिए, जिस प्रकार से अभी तक जैसे कार्रवाई पूरी करी गई है और आज भी जैसी कार्रवाई चल रही है, तो उम्मीद है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पर मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है, और साथ ही गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, काम की राजनीति को रोका नहीं जा सकता। मैम बस ये बता दीजिए कि क्योंकि जो ये कार्रवाई हुई है, ये अब क्योंकि अचानक हुई है, आज कोर्ट में भी इसमें चीजें चल रही थी, हम देख रहे थे, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, 22 अप्रैल की तारीख दी गई है, तो इतनी जल्दी किस बात की है? गिरफ्तारी की क्या जल्दी है, ऐसी रेड की क्या जल्दी है, ऐसी सर्च की क्या जल्दी है? और पूरा ये जो साजिश है, पूरी जैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये दिल्ली की जनता भी जानती है, और दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। जिस प्रकार से पुलिस यहाँ डिप्लॉय की गई है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। अभी बातचीत आपकी अंदर हो पा रही है या नहीं हो पा रही? नहीं, अभी बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही है। हमें अब जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आकर पता लग रही है, टीवी के माध्यम से पता लग रही है, और जल्दी ही अभी पता लग जाएगा आगे क्या मंशा है और ऐसी चीज़ों को क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक ही आदमी है जिससे डर है पूरे देश में, वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आगे क्या आप लोगों की? देखिए, अभी हम देखते हैं कैसे आगे कार्रवाई चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद सीएम साहब के साथ। कौन है? So clearly, of course, the reactions there continue. Aam Aadmi Party leaders outside Arvind Kejriwal's residence as we speak. We are told that it's an ED joint director who's reportedly leading the raids there. Radhakshmi Joshi, political analyst, is with us live as well. Radhakshmi Joshi, Aam Aadmi Party leaders reaching Arvind Kejriwal's residence. They're slamming the agencies. They're slamming the government, saying that if there's one person who the BJP is afraid of, it's Arvind Kejriwal. Good evening, Uday. That is very amusing. Let me just remind you that, the ED could have arrested Arvind Kejriwal after the third summons, after he has, when he did not address the third summons itself. They didn't need to wait so long. He has actually been pushing his limits all the time. He kept giving excuse after excuse. He kept taking the, everything for granted. He kept
kept thinking that he's above the law. The same person who in the past, before he had actually joined politics, and when he had said that he will never, ever, ever, ever join politics. So when he was not a part of any political party, so at that time he had said that all the politicians who are, who were in his list of corrupt people, they should be actually facing the whatever investigating agencies are there, and why should anybody be scared of it? And that if they are not, if they are clean, then they should be open to investigation. And today the same person, he is running from court to court trying to evade the investigation. So he is not even ready to face the investigation. Forget about the arrest. So now this arrest, actually he is liable to be arrested just for skipping the summons. So he is very well aware of that. And in fact, initially he probably thought that he would gain some sympathy out of all of this. But then now he saw that there is absolutely no sympathy for Manish Sisodia's arrest. So he could see that, and he probably thought that something similar will happen for him also, and that is why now he is trying to evade the arrest. So initially he thought that he would play this victim card, and that is why he thought that he would become the poster boy of the entire India alliance. And unfortunately for him, the alliance partners of the India alliance also did not put him up as a poster boy. So none of them actually took his case as the face or the issue to be taken up against PM Modi. So so he was actually facing a lot of issues with his alliance partners also. So now he knows that he has no other alternative but to face whatever investigation is there. So I think even at least now he should face the investigation. He should give whatever, if he has any kind of explanation for any of this, any of the charges, he should be able to give it. Why is he evading all of it? There is absolutely no need for this. He could simply have answered the queries. He knows very well what is going to happen, and that is exactly why he has been evading all of this. You saw what happened in the case of Mr. Hemant Soren also. He did something very similar. All of them, then they start talking about political vendetta. But then these are the very people who came to power on the charges of, or on the card of, going against corruption. And today they're the same people who are actually very deep, so deep into corruption. It is such a sad state of affairs. And instead of actually focusing on any of the issues for Delhi, whether it may be about the pollution, about Yamuna, about drinking water, electricity, about any of it, he is neck deep into either going from state to state and trying to increase his territory, or he is trying to get rid of his corruption charges. So, it is very sad for the people of Delhi, I would say. And at least now I think that, he should come clean about it. He should at least try to show that he is clean. There is nothing wrong in facing the investigation. Nobody is asking him to go and get arrested. At least he can go and face the investigation. That is the most basic thing that a person should do. Okay, let me also get in KV Dhananjay, advocate, into the discussion at this point. KV Dhananjay, do you believe that this is linked to how the hearing transpired today, with no relief currently being given to Arvind Kejriwal by the Delhi High Court? What do you make of this ED action this evening? Forget Mr. Kejriwal. You consider any citizen in this country. If a citizen of this country were to skip as many summonses that Mr. Kejriwal has skipped, he would barely be heard by the court or even entertained by the court, and then be given date after date. So it's a bit surprising here, because it's not a question of whether the ED would want to arrest him or not. It's just a question of how a public servant, in a very public manner, defies summons after summons in the manner that he has done. So this is really very perplexing, and this also undermines the rule of law. So I think the ED is also at fault here for repeatedly serving summonses on him, and then for not doing anything when they see that this man defies summons. And what we've read is that the court, in fact, have made strong observations about the fact that this man has repeatedly evaded the summons. So when you do that,
And if the agency decides to arrest you, then you will have no one but to blame yourself, because bail becomes real. The consideration of bail is generally not done immediately in such cases. The courts would say that, okay, you've just been arrested, but then you invited this arrest in this manner, so you cannot be considered for bail immediately, is what the general refrain from courts would be. So whatever Mr. Kejriwal is doing, I don't think any sane lawyer is truly advising him. Whatever he's doing is extremely on the bizarre side. This is not something that any person in public life ought to be doing. Skip summons after summons. If the summons was without authority of law, he could have just approached the High Court of Delhi, Honorable High Court of Delhi, and then asked for summons to be quashed. But you just don't assume that a summons that is made out to you is invalid, and therefore you will defy it. So what he did, I think, was bizarre in every sense. And for all that happens, in response to that, I think he has no one else but himself to blame. Now, I do not know about politics, but then the way I look at it, this is, I think, whoever has been advising him, I mean, whoever is a lawyer that's advised him so far, he should take a break. Because this is no way how any public servant, because Mr. Kejriwal, as a chief minister of the Delhi government and city of Delhi, is a public servant himself. A public servant, behaving in this manner in response to a summons and not going to a court and not having the summons validity questioned, I think it's really very strange. I would like to say that. And if this man gets arrested, the judicial system would not be in a position to extend sympathy. For that matter, it would also not be in a position to fast track his case and consider for bail, while so many more people whose bail petitions are languishing in courts. Because for your bail application or petition to be considered expeditiously, you must also show that you have respect for the rule of law. But this man has repeatedly shown that he has scant respect for the rule of law. It's not about politics. Now, if you happen to be the chief minister in the opposition party and you have CBI, which obviously operates under the central government, or the ED, which also operates under the central government, invoke the law and give you summons, that's exactly why we have courts. We have the high courts and we do have the Supreme Court. Judges in these institutions are insulated under the constitution from political pressure. And you go to those courts and you question these summonses. If you believe that these summonses were invalid or these summonses were a form of witch hunt, everyone else does it. Why did this man not do it? And not instead, going to the courts, but publicly defying these summonses, I think was a bad example for him to set. This is not right. Absolutely not right. Professor Madhav Nalapat, editorial director of the Sunday Guardian, also joins us live. Professor Nalapat, fast-paced developments taking place this evening at Delhi CM's residence. War of words also has erupted. The Aam Aadmi Party is attacking the government over this action, Professor. Well, they're blaming them for dictating the ED. Look, in my view, I mean, should the ED, for example, arrest Mr. Kejriwal, I am very certain that the ED would be acting on its own, and that obviously means the government will not really be interfering in the matters connected to the ED, because obviously politically it will be a very high risk situation when you arrest the chief minister of a state who's also the leader of a party. I mean, just a few weeks before an election, it's a very high risk situation, and I can't believe that the top leaders of the government and the BJP, who are very clued into politics, so it's very clear that the agencies are given the freedom to act on their own. I don't know whether he'll be arrested or not, but I agree completely with Mr. Dhananjayan that, frankly, evading so many summons is not really what is expected of a responsible politician, of a responsible chief minister. I would say that, if he had a problem, let's say, going to the ED office, then he could have told the ED, please come to my office and you can, interview me there. I'm reasonably certain the ED would have complied, or come to the house and I will talk to you there. The ED, I'm sure, that would have complied. Given the long rope it has given Mr. Kejriwal, the ED would certainly have complied. But I quite agree that repeatedly flouting the summons of the Enforcement Directorate, that sets a very bad precedent so far as the rule of law is concerned and respect for the rule of law is concerned. I think in that situation, the Chief Minister of Delhi has gone very wrong. First of all, the ED, in my view, should not have given him this much of a long rope. Much earlier, it ought to have either gone to his house or
or asked him to come to its office or something of the kind and questioned him in detail. And I think such questioning is very important in any case, because then you understand the facts of the situation very well when you're questioning the individual who's under suspicion. And the individual also has got the chance of explaining his or her actions. So that's a perfectly legitimate activity of any investigating agency. So I'd like to say very clearly, politically, this is a high risk situation coming so close to the election. There's no question about it. Therefore, I very much doubt that there is any political pressure on the ED to have gone to the House. I think that way the Aam Aadmi Party and the opposition parties are not correct. Having said that, I'd also like to say it was wrong on Mr. Kejriwal's part to have evaded so many summons, and it was wrong on the ED's part not to have taken the kind of action it took today, much before the election. The ED should have done, considered the electoral calendar and taken this action much earlier, because unfortunately, this giving an opportunity for political parties to paint the ED, in what it was called during the UPA period, a caged parrot, whereas in my view, which is based on rational analysis, it's very clear the ED has been acting independently. First, by giving him a long rope, and secondly, by now going to his house. And thirdly, if it arrests Mr. Kejriwal, then of course the political risk and the political gamble multiply very, very significantly. But from all these points of view, I'm glad that the ED acted now. But I wish it had acted earlier. But having said that, I think Mr. Kejriwal needed to explain matters to the ED much earlier than he did. So I would only like to say it's an unfortunate situation. And this situation could have been easily avoided by Mr. Kejriwal or by the ED acting with greater alacrity. Thank you. Yes. Okay. Let me quickly take that across to GVR Shastri as well, political analyst who's live with us. GVR, a lot of security outside Arvind Kejriwal's residence. What do you make of what is transpiring there in this political war of words which is also erupted? See, Uday, the most important aspect is law is equal for everybody, same. No exemption as far as Arvind Kejriwal or anybody X or Y Z is concerned. In the previous debate also, I said very clearly that, these political parties must understand the law. They should not take it grant. They are always take it grant. My Rajalakshmi is saying it's a corruption. It's not corruption. It's a loot. It's a public loot. Corruption is something different. It's a public loot. The allegation is not a small. It's a masterminded stroke, masterminded to cheat and intentionally knowing and intentionally master plan and plan to loot the common man purchasing power. Common man purchasing power has been looted. So what kind of, action? ED, I agree with Mr. Dhananjay. He said so many notices has been given. I don't know why ED is also wrong. ED should not, ED doesn't have that kind of power to give you so many notices. No. ED would have exercised it. Maybe they have given a long rope because of the political party. It's not that the commitment towards the constitution, the accountability, the liability, and the responsibility towards the constitution, the respect of the constitution. You are not respecting it. They are addressing BJP and Narendra Modi. That's a very unfortunate. There is a notice from Enforcement Directorate. There is no notice from Mr. Narendra Modi or the Bharatiya Janata Party. There is a notice from Enforcement Directorate. They think that, democracy is all about the people. Political parties doesn't have any value in our country. As long as you fight for the people and you will win it, that's fine. What kind of principles you lay down in front of the nation that while making this Aam Aadmi Party? It's not anti-corruption. It's a loot. It's not. If at all there is a corruption, at least one can understand. But it was not a corruption.
You see, the people are involved. Deputy CM, Kavi, that Telangana Chief Minister's daughter, the kind of magnitude you see, it's not a small thing. As a Prime Minister, he might also got shocked. The kind of magnitude, the kind of scam they prepared. It's not as even a scam also, it's a public loot. And that is the allegation. That is the allegation of Enforcement Directorate. You are a responsible citizen. You are forgot about Chief Minister or anything. Or Aam Aadmi Party President or the National General Secretary. You are first citizen of this nature. You have your own responsibility and commitment towards the Constitution. That also you forgotten. That also, this is a long rope, as Nalapad said. It's so much of long. I don't think you and Uday or Nalapad or I will get that kind of rope. One notice means you go and explain. You go and explain, you prove yourself. It is your ability to do it. That is also you ignored. You always blaming on political spectrum, this is what it is. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.